Hello students, how are you? In this video we will learn two topics. First is identity element and second is inverse of the element. Right? तो अब पहले समझते हैं what is an identity element. See students, now we know commutative law very well. What is commutative law? Commutative law is A star B is equal to B star A for every AB belongs to A. What is A? Capital A is the set on which binary operation is defined. Right? तो जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है वो सेट में से हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, कोई भी यहाँ पे सभी एलिमेंट्स लेने हैं वो सेट के, और उसके लिए अगर ये रिजल्ट मिलता है A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, देन द बाइनरी ऑपरेशन इज following the commutative law. We can say that. Now, if any binary operation is following the commutative law, then there may exist identity element for that binary operation. So, according to identity elements definition, if star is the sequence of binary operation on set A, and if there exists an element E in set A, here you have to notice that the identity element is E. It is denoted by small e, and it must be in set A where binary operation is defined. तो जिस सेट में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उसी सेट में ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है वो होना चाहिए. ठीक है, तो कैसे मिलता है? सच है A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A होना चाहिए. तो जिसके साथ ये बाइनरी ऑपरेशन में हम लेंगे वो एलिमेंट है A. अगर A स्टार E फाइंड करते हैं तो उसका आंसर A मिलता है. अगर E स्टार A फाइंड करते हैं तो उसका आंसर भी A मिलता है. फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, तो यहाँ पे जो भी A एलिमेंट मिलेंगे वो सेट A में से होना चाहिए. सेट A क्या है? जिस पर बाइनरी ऑपरेशन. Then we say E is an identity element for star. Star means binary operation. So, thus identity element is defined. Right? Now, we know it very well. We know it very well that identity elements for addition and multiplication. What is the identity element of addition? It is 0. Right? So we can say that 0 is the additive identity because it is the identity element of operation addition. So we can show this by using binary operation like this. See here, if I take a binary operation on set R, then I will write it as R plus R2R, and operation is addition, so I will write A star B is equal to A plus B. Now I want to find the identity element of this addition operation, right? So I will take this definition. Let E is the identity element, then A star E is equal to E star A is equal to A. Now apply this formula. So I will get A plus E is equal to E plus A is equal to A. See this.
Now I separate this equation like this. A plus E is equal to A and E plus A is equal to A. Therefore, now I will cancel out A, then I will get A equal to 0. From this result, I also can get E equal to 0 by cancelling this element A. So यहाँ पे दोनों जगह से E equal to 0 मिलता है. अब ये देखना है कि 0 है वो जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है वो सेट R में है कि नहीं. It is in set R, belongs to R. So E equal to 0 is the identity element for star, and star is defined as addition, so it is additive identity, right? So 0 is the additive identity, and in other words we can say that E equal to 0 is the identity element for star, which is shown as A star B is equal to A plus B. Okay, so ये हम पता कर सकते हैं ऐसे बाइनरी ऑपरेशन को यूज करके हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं. तो ये बात हुई एडिशन के लिए. अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. वी नो दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन R, राइट? तो हम ये देख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन को यूज करके ऐसे ही लेंगे. हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेके ये फाइंड कर सकते हैं. तो उससे पहले मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ. अगर वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, फिर भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा ये जरूरी नहीं है. इट मे और इट मे बी नॉट. व्हाई? सी हियर, इफ आई टेक binary operation on set n, I will take here n cross n to n. See, so A star B is equal to A plus B. Now calculation will remain as it is, but E equal to 0 doesn't belongs to n. See here, n. So we can say there E equal to 0 is not the identity element for star on n, defined on n, right? We should answer like this. It is not an identity element for n. So we have to check it out that whether identity belonging to X set on which binary operation is defined or not. ये जरूरी है. ये MCQs में यही गलती हो जाती है कि जो भी सेट दिया जाता है बाइनरी ऑपरेशन के लिए और जो भी सेट दिया जाता है जिसमें वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो मिल जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है वो सेट में होता ही नहीं. It doesn't belongs to that set, right? So we have to be alert on that thing. Another example, I am going to take binary operation on set R, so I will write it as R plus R to R, and operation binary operation A star B is equal to A into B. Now I want to find the identity element for multiplication. So I will take here A star E equal to E star A equal to A. Then by using this formula, A star E equal to, we should take A multiplied by E, and for E star A we should take E multiplied by A equal to A. Then now separate the equation. A multiplied by E is equal to A. Then E multiplied by A is equal to A. Now let us check here what happened.
A is cancelled out, then remaining term is 1 only. Here also A is cancelled out, and remaining term is 1 only. So E equal to 1 is the identity element. Now let us say whether 1 is belonging to R or not. Yes, it is definitely. So 1 belongs to R. 1 belongs to R. So E equal to 1 is right. So this is a multiplicative identity in R. We show it by using binary operations, right? So now let us take another example. This is the these are the simplest example. Now I will take one more example to clear this concept. Let us see. What is the example? Star is defined on Z by A star B is equal to A plus B plus 1. Now we want to find the identity element. How will we find it? We will use this definition. So, applying this definition, we can write it as here according to A star E is equal to E star A is equal to A for every A belongs to here Z. So taking this formula A star E, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है तो A है, सेकंड नंबर B है तो यहाँ पे B और प्लस 1 है तो ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे A है तो A लेंगे, सेकंड नंबर B की जगह पर E है तो E लेंगे और प्लस 1 लेंगे, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट नंबर E है तो E लेंगे प्लस सेकंड नंबर A है तो A लेंगे प्लस 1 फॉर्मूला में है 1 लेंगे इक्वल टू A. By separating this equation, A plus E plus 1 is equal to A and E plus A plus 1 is equal to A. Now, cancel out A. So, E plus 1 equal to 0. Remaining term is E plus 1 is equal to 0. Therefore, E is equal to minus 1. And now, from another equation, यहाँ पे भी A is cancelled out, getting A plus 1 equal to 0. Therefore, A is equal to minus 1. Now, दोनों जगह पे E की वैल्यू है सेम मिलनी ही चाहिए, ठीक है, ये A की वैल्यू मिलनी चाहिए. Do remember that identity element must be exclusive, right? And it must be in the set on which binary operation is defined. So here we have to check whether it is in Z or not. Yes, it is in Z. So we can take it as identity element of given binary operation. Thus, E equal to minus 1 is the identity element for star, right? So this type of questions are given in our exercise 1.4. You have to solve them. That exercise sums by using this definition, right? Now let us move on to this video, which is what? Inverse of an element of. If star is a binary operation on set A with an identity element E and corresponding to A belongs to A, it should be corresponding to element A, which is belonging to A. There exists an element A dash belongs to A such that A star A dash is equal to A dash star A is equal to E, where E is an identity element for star. We say A dash is an inverse of A and we denote inverse A dash of A by A inverse. This is the notation of A inverse. Do remember, this is the notation of
A inverse. It is called A inverse. And E is the identity element of that binary operation. ठीक है? तो अगर तो कोई भी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करना है तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, तो ही हम ये रिजल्ट यूज करके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कौन सा रिजल्ट? A star A dash is equal to A dash star A is equal to E. That means कि अगर कोई भी एलिमेंट A है, स्मॉल a, कोई भी जो सेट दिया गया है उसका एलिमेंट है, तो उसका इनवर्स फाइंड करना है। जो यहाँ पे हमने लिया है A dash, तो हमें ये रिजल्ट को यूज करके फाइंड करना होगा। रिजल्ट कैसे यूज करेंगे कि A star A dash is equal to E लेंगे और उस रिजल्ट के आधार पे हम A dash फाइंड करेंगे। उसी तरह A dash star A is equal to E लेंगे और उसके आधार पे हम A dash फाइंड करेंगे। दोनों में A dash इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो पहले फाइंड करना होगा हमें E आइडेंटिटी एलिमेंट, और बाद में हम उसका यूज करके उसको अप्लाई करके इस रिजल्ट में अप्लाई करके हम A dash फाइंड कर पाएंगे। तो जो भी A dash मिलेगा वो क्या होगा? A इनवर्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू E होगा और A इनवर्स स्टार A इज इक्वल टू E होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। वी कैन फाइंड A inverse by using this result or this result. Okay, now we know that in R for real number set, every non-zero real number small a has inverse 1 upon a for multiplication. For multiplication बोला है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ये बाइनरी ऑपरेशन R पे लेते हैं तो ये हम ऐसे लिखेंगे R क्रॉस R 2 R। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला गया है A स्टार B इज इक्वल टू हम लेंगे A इंटू B। ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ। अब इसके लिए हमें इनवर्स फाइंड करना है और वो प्रूव करना है कि 1 अपॉन A होगा। क्या होगा? 1 अपॉन A। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पहले तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। अभी अभी हमने समझा था E इक्वल टू 1। वी नो E इज इक्वल टू 1। नाउ by using this element and this result, if A dash is the inverse of element A, then we can take this result and we can take this result A dash star A is equal to E. Now put these values A star A dash, that means if A star B is equal to A into B, then we can take A into A dash is equal to E is equal to 1 लेना होगा 1। Here also A dash into A is equal to 1 लेना होगा। ठीक है, तो अब A dash फाइंड करना है। तो A dash क्या मिला? A dash is equal to 1 upon A होगा। देखो ये सामने शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो सामने जाता है, शिफ्ट होता है तो डिनोमिनेटर में मिलेगा। तो A dash is equal to 1 upon A मिलेगा। तो ये मिल गया इनवर्स। देखो इनवर्स ऑफ एलिमेंट A फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रूव हो गया। Therefore we can say that so A inverse is equal to 1 upon A. It is proved. So ऐसे करके हम इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए।
तो वो एग्जांपल हम लेते हैं। अभी अभी मैंने जो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए एग्जांपल लिया था वो ही एग्जांपल मैं लेता हूँ। क्या? इनवर्स फाइंड करने के लिए, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो वही एग्जांपल लेते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्टार इज डिफाइंड ऑन Z by A star B is equal to A plus B plus 1. Binary operation is defined on integer set Z, and operations formula is A plus B plus 1. A star B is equal to A plus B plus 1. Find inverse of any element if it exists. Any element means for every A belongs to Z, find A inverse. ये पूछा गया है। For star A Z cross Z to Z, where A star B is equal to A plus B plus 1. इसके लिए इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करना। तो अब देखते हैं, पहले क्या करना होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना होगा। अब मैं यहाँ पे वो फिर से फाइंड नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले एग्जांपल में जो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए समझा था वहां पे हमने वो आइडेंटिटी एलिमेंट इसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो हम जो वो बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर चुके हैं वही हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे। तो वो क्या था? फॉर स्टार हियर E is equal to -1. We know this because we have already found it, right? Now we will use it to find inverse of element. Now let A dash be the inverse of A. Therefore, A star A dash is equal to A dash star A is equal to E. Therefore, we can take this formula A plus A dash plus 1 is equal to A dash plus A plus 1 is equal to E. Put -1. See, this first number is A, so I take here A as the first number. A dash is the second number, so it is in place of B. So I will put A dash here in place of B. Here it is A dash and plus 1 according to formula. Here again we can take first number first, second number second, and third 1 according to formula, and E equal to -1. Now separating this equation, A plus A dash plus 1 is equal to -1, and A dash plus A plus 1 is equal to -1. You can take directly this step also. No need to write this step. Okay, you can take this step directly. You can. Now find A dash. To find A dash, let us shift A plus 1 right side. So it will become minus. A dash is equal to -1. Here I write this -1 which is already in right side, and now shifting this A right side becomes -A, and shifting this +1 right side becomes -1. Therefore A dash is equal to -A -2. Here also same calculation will be occurred. -1 -A -1. So I get A dash is equal to -A -2. See this, दोनों इक्वल है, सेम है। और यहाँ पे भी आपको ये बात याद रखनी है कि वो जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उसी सेट में मिलना चाहिए। तो ये Z में है,
belongs to Z because this binary operation is defined on set Z, so it should be belongs to Z. So ये मिल गया, तो अब हम लिख सकते हैं So required inverse of element A is A inverse is equal to minus A minus 2. See, this is the answer. So like this we can find inverse of any element of that set on which binary operation is defined. ठीक है, तो अब इस वीडियो में यहाँ तक, इस वीडियो में हमने दो पॉइंट कंसीडर किए थे, एक था आइडेंटिटी एलिमेंट एंड दूसरा यस इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट. तो दोनों में ही क्या हुआ, लेट अस रिकैप. अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को लिखा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए फॉर्मूला हमने ली थी कि A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A. दिस इज फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एंड A स्टार A डैश इज इक्वल टू A डैश स्टार A is equal to E. This is for inverse of an element. ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक. आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन टेबल. ठीक है, वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और बाद में हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.